यस सर। अच्छा, मजे की बात है, मैं पिछले 5 मिनट से मुसलसल बोली जा रहा हूँ। ठीक है, सर आपका माइक एक्सेलेंट। सो म्यूट। जस्ट माइक ऑफ। हाँ, सर इसलिए माइक सलाम दिया, मैं ऑफ। शायद नहीं नहीं नहीं, वो इसी से मुझे ये पता चला कि यार सलाम किया तो इट मींस के आवाज नहीं जा रही बीच में। ओके, एनी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ओके, just for the sake of the example, just consider that you have a gas in the container or the cylinder. Yeah, you have a gas in a room. Okay, so what we have done previously is that we have studied the macroscopic behavior of the gases. So what does mean by the macroscopic behaviors? We studied about the volume, we studied about the pressure, we studied about the temperature of a gases. Or whenever you have a temperature variation and if you are moving up from the absolute zero, so obviously molecules have the kinetic energy. So in a room full of gas, obviously each and every molecule has its own velocity. Okay, so we cannot pinpoint exact number of the molecules that have the highest velocity, that have the average velocity. But what we can do is that we can find out the probability how much molecules will have a how much ratio of the molecules will have a maximum velocity, how much will have a average velocity, how much will have a average root mean square velocity. Okay, so when there is a, let's suppose there are 100 molecules, so obviously there will some molecules that will have the highest velocity, some molecules will have the lowest velocity. So we want to discuss what fraction of those molecules will have the highest, lowest, and that of the intermediate velocity. And this is all. And this article is about the distribution of those molecular speeds, and we will discuss later on. And mathematically, we will calculate that what equations we can utilize to find out the distribution of the molecules, molecular speeds. Okay, it is an interesting article. ठीक है, you should be careful about the diagram which I will explain you. ठीक है, sometimes we take diagrams or the figures very casually, and all the calculations are usually done on the basis of graphical analysis. ठीक है, और here he is saying कि you have a gas, ठीक है, at room temperature. Okay, oxygen molecules at room temperature, and they have compared their molecular speeds. ठीक है, just hold on a second. This is the figure here. Okay, so this is the figure here where this curve is basically showing the speed of the molecules, and there on the left hand side on the y-axis you have the probability. Okay, so you can see that it is starting from the zero and it is going up to 1200. Basically it is going up to infinity, means that up to infinity, obviously very minimum amount of molecules will a very high speed can also be considered as an infinity. So you cannot say that it is the maximum speed here is the 1200, it is going beyond this one. Okay, so always consider that you have the velocity is up to infinity, from zero to infinity. So these are the oxygen molecules and which are confined in a gas container and at room temperature. Okay, so 300 Kelvin means that room temperature. So 27 degrees centigrade is normally considered as a room temperature. 20 to 30 degrees centigrade is normally considered as a room temperature. Here they are considering room temperature 27 degrees centigrade. So in Kelvin it can be written as 300 Kelvin. So on the figure B, they have compared the molecules at two different temperatures. One is at 80 Kelvin and other is at room temperature. So we will explain that how it will work out later on. All our discussion is about this figure, figure 19.A. So we will go for the article. सर जी रोल नंबर 71 का माइक ऑफ करना है। Excuse me, sir. Sir. Sir, your mic is आपकी आवाज फिर नहीं।
सर मीटिंग में नहीं है। मीटिंग में तो है सर यार। आ गया। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर अब आइए। सर आप भाई जो म्यूट ऑल अच्छा, मजे की बात है। फिर मैं डिस्कशन कर रहा था। एक्चुअली बेसिकली आई हैव रिमूव द रोल नंबर 71 because he was here, I think, just for the sake of the attendance. So kindly let him know that I have removed him from the class. He will not be able to join the class here. Okay, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, समटाइम्स टेम्परामेंट गेट्स डिस्टर्ब, ठीक है। यू शुड बी familiar when you join the class, kindly mute your mic. Okay, the thing is that these distribution of the molecule speeds or the fraction of the molecules which have certain speeds was defined by an equation which is known as the Maxwell's speed distribution law. And you do know that with the Maxwell, he basically gives the equation for the electromagnetic radiation. So here, in this case, for the ideal gas, he also has given the equation for the Maxwell speed distribution law. So there is no derivation for this one. Okay, you will directly write this equation. Okay, so it is not included in your post outline. Even it is not included in this chapter. There is no derivation for this equation right now. Okay, so you will not put your effort into the derivation of this equation. Okay, so here PV is basically the probability of the velocities. Okay, these are the probabilities of the velocities here. Okay, so this probability is directly proportional to what molar mass, okay, gas constant, temperature, and that of the velocity. Here it is 4 pi, okay, m by 2 pi RT raised to power 3 by 2. Then there is a v square e minus raised to power exponential, obviously, mv square by 2 RT. So this is the equation known as the Maxwell speed distribution law, and we will use this equation to find out the most probable speed, average speed, and that of the root mean square value of the speed. So here m is the molar mass, okay, r is the gas constant, v is the velocity. Okay, so in this figure on the y-axis, you are basically getting this probability. Okay, on the y-axis you have this probability, on the x-axis you have a speed. So this is the probability here along the y-axis. So which is showing aapke paas how much molecules have certain velocities. Here you can see that he has mentioned that these number of the molecules will have the root mean square value. These number of molecules will have the average value, and this is the probability that will have the most probable speed, that the maximum speed they will have. So if you can see that it is sort of a Gaussian curve, but at the tail end it is not exactly a Gaussian curve. From the start you can see that it is increasing, then uniformly increasing. At a certain point it reaches to a value, and then it starts decreasing. But at the tail end you can see that it is extending more further than compared to the initial stage. Okay, the reason for this one is, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, this one, it is more extended on the right hand side on the higher velocity compared to the lower velocity, meaning that at the higher, more molecules have the higher velocity compared to the zero velocity. All are starting from the zero velocity, but all are not ending at the 1000 meter per second. Okay, it means that there are some molecules that have the velocity greater than the 1000 meter per second, some has 1200 meter per second, and there are still more molecules that will have the velocity greater than this one. Okay, so it means that at the start all have the zero velocity, but with the passage of the time it increased there. So this is the basically the probability, or mathematically we will derive the equation for this average speed, most probable speed, and that of the root mean square value. Okay, so coming toward this one again, this equation,
He's saying that probability is basically the dimensionless quantity, PV into dV. Okay, why it is a dimensionless quantity? Because it just gives the number of the molecules or the fraction of the molecules that have this certain speed. In this scenario, he's setting a certain interval, which is this one, dV. So PV into dV is basically a dimensionless quantity, and it is just showing the number of or the fraction of the molecules that have this speed. So we will start from this point. Okay, so you can see here that it is almost a rectangle. Basically, they divided the regions into the small. जी बेटा, आपने कोई क्वेश्चन किया था? सर डीवी क्या है हमारे पास यहाँ पे? dv, वही मैं बेटा बताने लगा था. dv is basically this interval of the velocities. ठीक है, so we will start from here. This is the dv here, this is the smaller region. Basically, when you find out the instantaneous velocity, how you basically find out the instantaneous velocity? You basically divide the regions into very small area, infinite small area. ठीक है, और then क्या होता है कि afterwards you add them by taking the integration. So here we want to find out the fraction of the molecule. We will start from the small fraction of the molecules that have the velocities lying in between the dV. So this is the dV here. Is it clear, beta? This is the region on the x-axis is representing the dV here, as they have mentioned here. Okay, the width of this strip is basically dV, meaning that these the fraction of molecules which we are considering right now, they have the velocity that lies between the dV. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so after taking the velocity, ठीक है, what happens that when you have the you divide the elements or the, let's suppose I will give you an example of the Gaussian surface. When you have studied in FSC, you studied the Gaussian surface about the flux in order to calculate the flux around the slender, infinite, small, large sheet and circular disc, something like that. Gaussian surface की थी आप लोगों ने? Yes, sir. की थी. Gaussian loop कह लें. Gaussian loop. So what at the start, what you have done there is you have basically divided those dead Gaussian surface into a small elements. Okay. After that, what you have done, you have taken the one element, you have calculated the equation, and then you have integrated the value on the overall whole surface. This is what you have done by using the limits. Again, in this scenario, we are taking the small portion, okay, which is dV here. Later on, what we will do is that we will apply the limit from 0 to infinity in order to get the total fraction of the molecules that have the certain values. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. So here in this case, he's saying this product PV into dV is the fraction of the molecules with the speed in the interval dV. So this line is clear to you. This sentence is clear to you. Got the understanding? Okay, should I repeat something? Repeat. Yes, sir. Okay. Repeat कर देता हूँ. एक second. Admit कर लूँ यार बेटा. काफी students हैं. एक second बेटा. Admit all. Okay. So probability means the fraction of the molecules. ठीक है. PV into dV means that the fraction of the molecules that have this speed. ठीक है. This area is basically giving the fraction of the molecules that have the speed between the dV. dV को आप इस तरह ले लें. dV is basically V2 minus V1. So I will just hold on a second. मैं आपको clear कर देता हूँ. Let's suppose this is the right edge is V1 and the other edge is V2. ठीक है. Clear? कि on the left edge is V1 initial velocity. ठीक है. This is the V1. You are seeing my arrow. ठीक है. ये जो point, ये it is V1 and it is V2. ठीक है. So it means कि आपकी जो velocity है
we want to find out the fraction of the molecules that have the velocity between v1 and that of the v2, यानी 600 मीटर पर सेकंड से लेके 605 मीटर पर सेकंड तक जितने मॉलिक्यूल्स की velocity है, basically this PV dV give us that fraction of the molecules. Is it clear now? Yes. अच्छा, अब PVDV आया क्यों है? Why we are writing it as PVDV? So if you see here that it is these are the fraction of the molecules that are existing here, ठीक है, which have the velocity in range the dV. Okay, these are the molecules. Okay, so this is basically an area. It is of rectangular strip. So rectangle का area क्या होता है? Basically it is length into width. यही होता है? Yes. Okay. So here you can, so this area, what is length of this area? PV, isn't it? The length of this area is PV. Here it is जी sir. dV. So obviously length into width will give me area, basically give me the fraction of the molecules. Obviously जब ये मैं area लूँगा, it means के it is giving me the fraction of the molecules that are existing in this region. ठीक है, इस एरिया के अंदर जो molecules exist कर रहे हैं, basically they respond to the certain velocity which is v1 and v2. ठीक है, now it is clear कि थोड़ी सी चीज मजीद एक्सप्लेन पूछ ले बेटा. ये फिगर जो है यही मेन है और आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट. सर वो ग्राफ की लाइन का बता रहे थे कि लेफ्ट साइड पे छोटी और राइट साइड पे लंबी है, वो कैसे? हाँ, एक्चुअली ये है कि लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो स्पीड. ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप रेस लगाना शुरू करते हैं. ठीक है, नाउ देयर आर 10 मेंबर्स. ठीक है, they start from the starting line, so all will have a velocity. क्या होगी velocity सब स्टार्टिंग लाइन पे? ज्यादा होगी. नहीं, स्टार्टिंग लाइन पे कितनी होगी? जीरो. मतलब बिफोर रनिंग जीरो. Okay, so now after the whistle they starts running and they have to reach to a certain destination point or rally point. ठीक है, at the end, ठीक है, जब वो क्रॉस कर रहे होंगे फिनिश लाइन, all will have the same velocity or different? डिफरेंट होगी ना. कोई पहले पहुंच जाएगा, कोई फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगा, कोई सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा, कोई थर्ड नंबर पे पहुंच जाएगा. यही होगा. यस सर. ओके, अब व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो, ठीक है, जीरो पे सी सब की वैल्यूज, जब आप एंड पे पहुंचे हर एक की वेरी कर रही थी वैल्यू. नो, ऑल आर नॉट रीचिंग एट द फिनिश लाइन एट द सेम पॉइंट. ठीक है, अगर ये फिनिश लाइन पे सेम पॉइंट पे पहुंचते तो ये कर्व इट शुड बी समथिंग लाइक दिस वन होनी थी. ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस वन कि दे आर ऑल रीचिंग, मतलब जस्ट लाइक दे स्टार्टेड एट दिस पॉइंट एंड दे शुड बी लाइक दिस वन. बट एट द एंड क्या हुआ है कि किसी की वेलोसिटी कुछ डिफरेंट है, किसी की कुछ ज्यादा है, किसी की बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, स्टार्ट दे वर जीरो. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स की थी, इनकी जीरो थी मिनिमम. ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी जीरो पे मिनिमम थी. आपने ग्राफ को समझना. ठीक है, बेसिकली जीरो स्पीड पे कितने थे मॉलिक्यूल्स, प्रोबेबिलिटी जीरो क्यों लिया उसने? ये ग्राफ ये कह रहा है कि 0 मीटर पर सेकंड के 0 मॉलिक्यूल्स हैं. क्यों उसने ये बात की है? सर ये ऑलवेज इन मोशन होते हैं. क्यों? मुझे तो नहीं कहीं नजर आ रहा है. सर आपकी बात समझ नहीं आई. दे शुड बी इन मोशन. ग्राफ मुझे क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस ग्राफ टेलिंग मी? आप जीरो के ऊपर इट इज शोइंग मी दैट देयर आर 0 मॉलिक्यूल्स. यही नहीं बता रहा, 0 प्रोबेबिलिटी है, 0 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ए 0 स्पीड. क्यों? जी सर. क्यों ये ग्राफ क्यों ये कह रहा मुझे? सर क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल कभी रेस्ट पर नहीं होते. आपको कैसे पता है? रेस्ट पे तो हो सकते हैं. सर यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर लिया था ना 27 डिग्री सेल्सियस. यस, दिस इज द पॉइंट. दिस इज द पॉइंट एग्जैक्टली बेटा, कि हमने स्टार्ट में क्या बात की थी कि दे आर एट 300 केल्विन. सो ऑब्वियसली 300 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स हैव ए काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, 0 केल्विन वो होता है जिस पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. सो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल हैज
kinetic energy at room temperature. ठीक है, so obviously there will be no molecule which has a zero velocity. ठीक है, so उसने क्या किया, probability no speed has increased, ठीक है, with the passage of time, ठीक है, speed increase कर रही है, ठीक है, number of molecules भी बढ़े, and then there comes a peak point. This is the peak point. Now this is the maximum velocity which a molecule have in that container. ठीक है, after that क्या है, ये maximum number of molecules and they have the speed, this one, मतलब 400 meters per second. These are the maximum molecules. Okay, so हम इसे कहते हैं most probable molecules जो हैं जिनकी velocity जो है वो 400 meter per second होंगी. Let's suppose if you have 100 molecules, तो 50 जो हैं उनके पास ये 400 है. Okay, then afterwards ठीक है, इट्स डिक्रीजिंग. ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं कि जीरो अगर होता नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी. ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि विद पैसे नीचे जाते जा रहे हैं. अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कम होते जा रहे हैं, किसी की 1200 है, किसी की 1300 है, किसी की 1400 है. तो टेल एंड पे इट इज मच मोर एक्सटेंडेड कंपेयर टू बेस एंड जो कि हमारे पास ये है. सो अब क्लियर हो गया कि क्यों टेल एंड पे ज्यादा है बेटा? यस जी सर, क्लियर है. नहीं, किसी और ने कहा था कि एक दफा एक्सप्लेन कर दें, उसे समझ में आई? यस सर. ओके, चलो गुड. सर, अच्छा जी बेटा. सर जी, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सर मैक्सिमम हम 1 पॉइंट नहीं लेते? अभी थोड़ा सा आगे मैंने तुम्हें बताना, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ. ठीक है, उसमें ये होता है बेसिकली बेटा जो आपके पास हाँ प्रोबेबिलिटी की जो बात है ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के हैं. पीवी इंटू डीवी जो है बेसिकली इट इज गिविंग मी द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो आगे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा सुकून करेंगे आप, ये आगे की बात है. यस सर, थोड़ा सा नहीं ज्यादा कर ले, टेंशन नहीं ले. चलो, नहीं ज्यादा नहीं करना, फिर मेरा पढ़ाने का दिल नहीं करना. अच्छा, एनी अगेन सो इन दिस पैराग्राफ क्या है कि दिस फ्रैक्शन पीवीडीवी जो हमने अभी किया है, दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्ट्रिप. ठीक है, सो दिस वाज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप. ठीक है, और पीवीडीवी मैंने आपको बताया व्हाई इट इज एरिया ऑफ द स्ट्रिप. लेंथ इनटू विड्थ जो है वो हमारे पास क्या है, पीवी और इनटू डीवी है. विड्थ डीवी, लेंथ इसमें पीवी के बराबर है. ठीक है, सो अब ये क्या करता है, ठीक है, द टोटल एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, अब अगर मैंने चले ये तो हमने कह दिया कि ये दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट हैव दिस स्पीड. अगर मैं ये चाहूं कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल ऐड द टोटल स्ट्रिप्स. यही करूंगा, सबको ऐड कर. यस जी सर. सबको ऐड कर दूंगा. मैं इस स्ट्रिप यहाँ पे भी स्ट्रिप बना लूंगा, मैं यहाँ पे भी स्ट्रिप बना लूंगा जी. ओके, देन आई विल ऐड देम. सो हाउ आई विल ऐड देम? ऑब्वियसली आई विल ऐड देम बाय इंटीग्रल. ठीक है, इंटीग्रल लगा के. आप इंटीग्रल कब लगाते हैं और अलजेब्रिक सम कब करते हैं? कोई मुझे बताए? इंटीग्रल सारे इंस्टेंटेनियस के लिए होता है. ब्रेक इंस्टेंटेनियस है हमेशा है. हाँ, नहीं, हमेशा बेटा याद रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर दिस वन. इंटीग्रल इज फॉर फ्रेंच मतलब इनफिनिट स्मॉल एलिमेंट्स. ठीक है, जब आपके पास बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया हो चीजों को, देन वी यूज द इंटीग्रल टू सम अप. ठीक है, एंड व्हेन यू हैव द मेजर मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड देन यू वांट टू ऐड देम, यू यूज द अलजेब्रिक सम. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक हो गया बेटा? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने. सर आवाज आ रही है बेटा मेरी? आप सर आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन खत्म हो गई शेयर होना. स्क्रीन को बड़ी तकलीफ हुई है, मोबाइल जो है वो कनेक्टेड है, स्क्रीन कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, सो जस्ट फॉर
वेट करो यार, इसको क्या तकलीफ हुई है। वैसे चलो क्लास एंड ना कर लें, अभी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ही एंड होने वाली थी। यस सर बेशक 7 मिनट रहते हैं। 7 लेते मिनट रखते हैं, चलो फिर 7 मिनट गपशप करते हैं, अगर होगी स्टार्ट तो होगी, ना हुई तो फिर 1 सेकंड।